Okay, good morning everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है ऋषभ. Let's begin today's class for economics and finance issues and analysis. Okay, not a very long class. Just bear with me a minute. Some tech issues. Okay, so yes, good morning Aniket, good morning Nikhil, good morning Nivedita, good morning Aniket. Second. Okay, now let's start. Good morning Gaurav. Let's start the class. So, number one, SBI to consider 5 billion, raising $2 billion via offshore bonds. सिंपल न्यूज है, फेज वन टाइप, ज्यादा याद नहीं करना है. अब ये कीवर्ड देखो, इट इज कंसिडरिंग. दिस मीन्स अभी एक मीटिंग होगी ऑन अप्रैल 18th फॉर एसबीआई, देन दे विल रेज 2 बिलियन, क्योंकि बैंक्स आर रेजिंग बॉन्ड्स टू वेरियस बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट लाइक टीयर 1 टीयर 2, हर तरह से रेज कर रहे हैं. नाउ एसबीआई इज अ बिगर बैंक गोइंग फॉर ऑफशोर बॉन्ड्स. ऑफशोर मीन्स भारत के बाहर अपने बॉन्ड्स को रिलीज करेंगे, आइदर as a public offering, like a masala bond is also an offshore bond, और public offering भी हो सकती है और private offering भी, private placements भी हो सकते हैं. Okay, so SBI would consider raising $2 billion via offshore bonds, means भारत के बाहर से $2 billion raise करेगा. So it can raise through public offer or a private placement in US dollars or any other freely convertible foreign currency like euro, pound, anything. ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24 मीन्स पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए $2 बिलियन ऑफशोर से उठाएगी एसबीआई. सिंपल. नाउ पीएसयू कैपेक्स क्रॉसेस 6.46 ट्रिलियन ऑफ द रिवाइज्ड टारगेट. अब ये क्या है? सो पब्लिक सेक्टर यूनिट, वी हैव रेड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स, जिसकी भी 100 करोड़ से ज्यादा टारगेट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का. ठीक है, दोज आर गोइंग टू क्रॉस देयर capital expenditure target for financial year 23 by at least 9.5%. ठीक है, 9.3% है, 9.3 है, 9%, 10% के बीच में याद कर सकते हो, 9.5 के बीच में. ठीक है. So the capital expenditure by large central public sector company having a 100 crore or more capital expenditure target has achieved the annual revised target of 6.46 trillion rupees, which is 9.3% above the actual cap. Means last year के capex से this year we have done 9.3% above. So capex target covers 54 CPSEs, 5 departments, और इसकी मंथली रिपोर्ट जाती है पीएमओ के पास. लास्ट मंथ का हमने देखा था कि 81-82% अपना टारगेट अचीव किया था. नाउ दे हैव कंप्लीटेड देयर रिवाइज्ड एस्टिमेट टारगेट ऑफ 6.46 ट्रिलियन. तो रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना था? रिवाइज्ड एस्टिमेट around 6.5 trillion rupees by 54 CPSEs. ओके, तो सबसे सबसे ज्यादा अचीवमेंट किसकी रही है परसेंट वाइज? सो इट इज एचपीसीएल, अराउंड 300% मोर देन देयर टारगेट. ठीक है, अपने रिवाइज टारगेट से 300% ज्यादा इन्होंने अचीव किया. ठीक है, एंड हाईएस्ट कौन अचीव किया? मीन्स हाईएस्ट टारगेट फॉर ओएनजीसी अराउंड 30,000 करोड़. ठीक है, तो हाईएस्ट रिवाइज टारगेट फॉर ओएनजीसी अराउंड 30,000 करोड़, 100% अचीव. ओवरशूट सबसे ज्यादा किसने किया अपने टारगेट को? एचपीसीएल, दैट इज बाय 300%. ओके मनीष, आई डोंट नो, वाज देयर अ पीआईपी क्लास? आई डोंट नो. ओके, तो सबसे ज्यादा ओवरशूट किसने किया? एचपीसीएल. हाईएस्ट बाय वैल्यू टारगेट किसका था? ओएनजीसी, 30,000 करोड़, 300%. ओके, नाउ RBI's IT service outsourcing norm from October. सिंपल है, याद करना इसमें क्या है?
IT out service outsourcing means regulated entities under RBI. regulated entities क्या क्या है RBI के अंडर में? बैंक्स हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, अदर काइंड ऑफ बैंक्स है लाइक NBFC, प्राइमरी, UCB, कोऑपरेटिव, सारे तरह के बैंक्स जो भी RBI के रेगुलेशन में आते हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ RBI. So from October 1st, 2023, October 1st, 2023, new outsourcing IT norms will be in place. But इस न्यूज में ये है कि अगर अक्टूबर से पहले किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी IT आउटसोर्सिंग मीन्स गिविंग योर IT वर्क टू सम अदर प्राइवेट कंपनीज. ठीक है, तो इसका मतलब होता है आउटसोर्स मीन्स आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वो IT के काम नहीं कर रहे हैं, some third party company is doing your IT work. So IT outsourcing. So IT outsourcing के नए नियम लागू होंगे अक्टूबर 1 से. बट जो अक्टूबर 1 से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं या अक्टूबर 1 के पे या उसके बाद उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है, then some leverage or long rope has been given by RBI. So let's see about it. Okay, so RBI has released the final norms for outsourcing IT related services by financial sector entities. ठीक है, ये अक्टूबर 1 से रिलीज हो रहा है. So regulator has given 12 months to comply with the norms for existing contracts, which will come up for renewal before October 1. आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया अक्टूबर 1 से पहले और रिन्यू किया कोई कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 1 से पहले, then you will be given a 12-month time from October 1st. मतलब अक्टूबर 1 से लेके 1 साल का टाइम मिलेगा that you can renegotiate your deals and then comply with the October 1 norms. Point number 1. लेकिन अगर मान लो कोई रिन्यूअल है आपका with a private sector whatever outsourcing that you have done और वो अक्टूबर 1 या उसके बाद रिन्यू होने वाला है, then this October 1 norm will give you a long rope of 36 months or 3 years. 3 साल तक आपको मिलेगा that you can comply with the new IT outsourcing norm. ठीक, तो सिंपल सी बात याद ये रखनी है, अक्टूबर 1 से पहले अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है या रिन्यू हो रहा है, then you will be given 12 months after October 1 to comply with the new norms. If your contract renewal is after October 1st of 2023, then you will be given 36 months from the 36 months of the renewal date from October 1st, 2023. Simple. For agreements that are due for renewal on or after October 1, the regulated financial institution has been asked to comply with the norms within 36 months of renewal dates. तो बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है, अक्टूबर 1 के पहले 12 महीने, अक्टूबर 1 के बाद अगर रिन्यूअल है तो 36 मंथ फॉर अचीविंग द फॉर गोइंग विद द कंप्लायंस IT compliance norms. ठीक है, with respect to new outsourcing agreements that come into force before October 1, the entities must comply with the new norms, preferably from agreement date but not later than 12 months from the date of issuance of norm, that is October 1st. तो प्रेफर ये कर सकते क्योंकि नॉर्म्स तो रिलीज हो गए फाइनल नॉर्म्स, सो इवन इफ अगर अक्टूबर 1 के पहले आप कोई नया प्रोजेक्ट या आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं तो यू कैन कंप्लाई विद द नॉर्म्स बिफोर हैंड, बट इवन इफ यू डोंट डू यू विल गेट अ 1 year period to be into the compliance with IT agreements. Okay, new norms are applicable for Indian banks, NBFC, primary cooperative banks, credit information companies, and all other entities that are regulated by RBI. Okay, according to RBI. ठीक है, तो जितने भी बैंक्स है, फॉरेन, इंडियन, कोऑपरेटिव, एवरी बैंक, एवरी रेगुलेटेड एंटिटी अंडर RBI will come under this norm. Which monetary policy internally important? इस बार वाली पढ़ लो, अगली वाली देखी जाएगी जब होगा एग्जाम तब देख लिया जाएगा. दिस वन वॉज नॉट वेरी बहुत कुछ चेंज तो होगा नहीं आज इस बार वाली तो मॉनेटरी पॉलिसी में, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर मच, नो प्रॉब्लम, जस्ट रीड इट वंस. Now World Bank raises to 2023 global growth outlook to 2%. ठीक है, World Bank raises 2023 global outlook on the back of China.
क्योंकि चाइना की रिपोर्ट, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में, पहले चाइना को दे टोल्ड, द वर्ल्ड बैंक टोल्ड दैट 4.3% पे ग्रो करेगा चाइना फॉर 2023 कैलेंडर ईयर, बट according to latest estimate of World Bank, the Chinese economy will grow at 5.1%. The Chinese economy will grow at 5.1%. That's why the World Bank has revised the global GDP growth rate at 2% from 1.7%. ठीक है, तो 2% कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना विल ग्रो एट 5.1% rather than 4.3% as earlier estimated. Okay. Now OIS market sees rate cuts before 2023 ends. Now again a news from RBI. So India's overnight index swap rates are pricing interest rate cuts by RBI with a clear timeline after central bank kept the rates unchanged last week. So OIS rates are interest rate derivative products that move as per the expectation of rate trajectory. ठीक है, अब swaps क्या होते हैं? You must have read in your finance class. Swaps are simply derivative instruments to hedge. ठीक है, या तो अपना को डाइवर्सिफाई करना है आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और यू हैव टू हेज योर इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल. वेट, let's take an example. There is an OIS rate or there is a fixed rate. ठीक है, ओवरनाइट स्वैप रेट है, let's say it is around 6.25% and it changes. अब ओवरनाइट है तो ये चेंज होता रहेगा. सो ये मान लो 6.25% है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन एंड इट इज 6%. ये आज का रेट है. ठीक है, यू गो इनटू अ स्वैप अग्रीमेंट विद दिस कि आपका लोन टेन्योर 10 साल बाद मान लो खत्म हो रहा है, आफ्टर 10 years. I am just giving an example. So today OIS is 6.25%, fixed is 6%. Let's say let us suppose, ठीक है, चलो थोड़ा और ओरिजिनल हो जाते हैं क्योंकि 6.5 तो रेपो रेट है. सो लेट्स से 7% इज द फिक्स्ड रेट. ठीक है, तो आपने स्वैप में चले गए आफ्टर 10 year कि 10 साल के बाद हम वापस मिलेंगे. ठीक है, लेट्स से फिक्स्ड है तो 10 साल के बाद भी ये 7% रहेगा. एंड OIS रेट, अब ये 10 साल के बाद मे बी, सिंस इट इज फ्लोटिंग, मे बी दिस OIS रेट इज आइदर हायर और लोअर. ठीक है, या तो ये हाई हो सकता है या ये लो हो सकता है. लेट्स से इट गोज हायर. ठीक है, लेट्स से इट गोज हायर टू 7.5%. ठीक है, अब ये आपने एक स्वैप किया था टू हेज. ठीक है, दिस OIS इज नाउ 0.5% मोर देन द फिक्स्ड रेट. ठीक है, अब ये ज्यादा है. द पार्टी हैविंग OIS विल नाउ गेट द डिफरेंस अमाउंट फ्रॉम द फिक्स्ड रेट. ठीक है, आपको डिफरेंस अमाउंट मिलेगा बिकॉज यू आर पेइंग हायर इंटरेस्ट रेट आफ्टर 10 years देन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला. तो जो आपको डिफरेंस अमाउंट है दैट विल बी गिवन एंड योर लोन और द इंटरेस्ट रेट विल बी कवर्ड. मतलब आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, एंड अगर यही स्वैप रेट कम हो जाते हैं या 6.25 ही रहते हैं, लेट्स से 6.5 होता है 10 साल के बाद बढ़ के. ठीक है, एंड your fixed rate is still 7%, then there is a credit spread of 0.5%. अगेन जिसके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट था उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बट सिंस इट इज इन अ स्वैप अग्रीमेंट विद द ओवरनाइट इंटरेस्ट swaps, then ये जो 0.5% का गैप आया है that will be provided with the party. let's say एक पार्टी A है एक पार्टी B है. this party A will give 0.5 मतलब 0.6/2 0.3% के आसपास का इंश्योर्ड अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा. मतलब जो आप 0.5% ज्यादा दे रहे हैं उसका कुछ हिस्सा जो भी कॉन्ट्रैक्टेड होगा उसका कुछ हिस्सा मीन जनरली क्या होता है बाई 2 कर दिया जाता है. जितना भी स्वैप का रेट होता है, डिफरेंस जो होता है, स्प्रेड जो होता है, उसको बाई 2 कर देते हैं. ठीक है, अब ये ऑड में डिफरेंस है तो प्लस 0.1 करके बाई 2 कर दिए तो 0.3.
0.3% का आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा ऑन योर एक्स्ट्रा प्रीमियम इंटरेस्ट दैट यू आर गिविंग। अगर समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं भी समझ में आया तो भी वेल एंड गुड, लेट मी रीडिफाइन इट। सो बेसिकली स्वैप के और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के बीच, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड ओवरनाइट इंटरेस्ट स्वैप रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, द क्रेडिट स्प्रेड बिटवीन फिक्स्ड एंड OIS between company A and company B, if you go into a swap agreement, then that difference is insured or hedged. ठीक है, so if you are paying higher interest rate, then the party giving lower interest rate will give you some amount, will provide you some amount on the spread of interest rate. Simple यही होता है swap. Okay. Now, OIS rates are interest rate derivative products that move as per the expectations of rate trajectory. अब expectation होती है 6.5% है, अगर repo rate बढ़ा नहीं है, this means the interest rate on loans will also not rise. Since interest rates on loans will not rise, people will not demand this overnight interest swaps as much. इतना ज़्यादा demand नहीं रहेगी because people don't have to pay higher interest rate. ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट देना नहीं है तो पीपल डोंट वांट टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट और हेज देयर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं तो ओआईएस की डिमांड कम हो गई, ओआईएस की डिमांड कम हो गई, अगर डिमांड कम होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ओआईएस का गिर गया। सो रेट फ्लक्चुएशन, स्वैप्स आर नाउ प्राइसिंग इन रेट कट्स बिफोर द एंड ऑफ 2023. Swap rates plummeted after RBI surprised the market participant by keeping the repo rate unchanged at 6.5%. ठीक है, before that RBI delivered 6 consecutive hikes of an aggregate of 250 basis points. Okay, the 2-year swap rates dropped by 25 basis point to 6.15%. ठीक है, and the more liquid 1-year swap rate plunged to 27 basis point to 6.53%. You don't have to remember all this क्योंकि हर 15 दिन पे फिर चेंज हो जाएगा, तो याद नहीं करना है, बस याद ये रखना है कि since RBI did not increase the interest rate, so now the people who are going to take loans, they don't have to pay extra interest. अगर extra interest देना नहीं है तो they don't have to go into that overnight index swap. उनको hedge नहीं करना पड़ेगा, अपना इंश्योर नहीं करना पड़ेगा the extra premium that they have to pay. So that's why the demand for OIS falls down. If the demand falls down, they will have to reduce the interest rate so that people will want to take OIS more. ठीक है, ये swaps लेने का ट्राई करेंगे क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो देयर विल बी अ बेटर स्प्रेड, ज्यादा इंश्योर्ड रहेगा उनका इंटरेस्ट रेट। सिंपल। बॉन्ड के केस में ये उल्टा होता है। ठीक है, अगर डिमांड फॉर बॉन्ड बढ़ती है तो यील्ड कम हो जाती है, दैट्स वाई वो चीज दूसरी होगी, बॉन्ड दूसरा होता है, ये स्वैप्स आर डिफरेंट थिंग। तो अभी स्वैप पे पड़े रहना है एंड इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये स्वैप रेट्स चेंज ओवरनाइट नाम है ना, तो हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन पे चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द स्वैप्स। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट रेट दैट इज बीइंग फॉलोड बाय आरबीआई। सो जस्ट रिमेंबर कि स्वैप होते क्या है, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। Okay, now mutual funds invest 1.82 trillion in equities. This is the news. ठीक है, according to SEBI data, 1.82 trillion rupees have been invested by mutual fund in equities. अब equity, hybrid, debt, कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं. So equities means direct companies के stocks कितने खरीदे म्यूचुअल फंड ने? 1.82 trillion rupees. Not much higher than last year because it was 1.81 trillion last year. Because there was a volatile market this time. So people preferred that instrument because that instrument खुद ही इतना ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं. They are beating inflation. ठीक है, that's why that instrument were preferred, but still 1.82 trillion rupees were invested by mutual fund in equity. Last year 1.81 trillion rupees was invested. Last year 1.81 trillion was invested. This year 1.82 trillion rupees. ठीक है, due to strong interest from retail investor and due to correction of market that led to reasonable valuation. Okay, now that's it for today. Let's do MCQs. So those people who are watching a recording, please try these MCQs and please try to comment. So, easy MCQs. ये कल वाले हैं. Let's revise it.
So under the trade norms, a WTO member food subsidy bill should not breach the limit of 10% of value of production for developing countries. If a country is breaching this limit, it can invoke the dash. करेक्ट निवेदिता, ईशा, सुमित, निखिल. सही जवाब पीस क्लॉज and 10% value, also remember this. Correct, PJ. Okay. Now India's biggest source of FPI is dash in financial year 2023. Correct, Manish. सही जवाब. Correct, PJ, Sumit, Isha. Right. Okay, सही जवाब. क्रोनोलॉजी में भी लगा दिया जाए. US is right. It is number 1. And number 2, Singapore. Number 3, Luxembourg. And number 4, Mauritius. Remember, कम से कम top 3 तो याद रख लेना. Correct, Nivedita. Now, about the recently launched tiger sensors, which of the following is incorrect? Correct, BCDA. Correct, Isha. Fastest finger first. Mm, correct, Subit. Correct, Isha. No, the second one is correct. Correct, PJ. Correct, Subha Brata. Correct. Okay, everyone is right. Nikhil Nivedita, correct. Let's see this. So E is wrong. Why it is wrong, please try to comment and let's discuss the other options. So the number of tigers increased by around 7%. अगर ये 6.4% 7 नहीं भी आता तो around 7% increase and 3167 number in 2022. ठीक है. This was the 5th cycle of India's tiger census. Absolutely right. Remember this point, these 2 points. India also launched International Big Cats Alliance. Correct, for 7 big cats. Okay, Project Tiger launched in 1973. Correct. So this was 50 years celebration. Okay, Bandipur Tiger Reserve. Now E is wrong because Project Tiger is not a constitutional authority. Nowhere it is mentioned in the constitution. जब 1950 में बना था तो कहीं ये Project Tiger के बारे में बात नहीं हुई थी उसमें. ठीक है, so it is a statutory authority. वो भी statutory बना है बाद में around 2006 under NTC. Yes, NTCA is the authority. Correct. Now for today's questions. Easy questions. ठीक है. What is the maximum amount of money that State Bank is considering to raise through offshore bonds? Correct, Nivedita. Sumit, right. B is the right answer. Correct, PJ. Correct, Subhabrata. Correct. सही जवाब
करेक्ट मनीष, कल वाले का आंसर भी देना चाहिए ऐसे मनीष. Okay. So now what is the percentage increase in the capital expenditure by large CPSEs with a target of 100 crore or more? ठीक है, percentage increase in financial year 23 as compared to financial year 22. Percentage increase. Correct, Sumit. PJ Nivedita, right. C is the right answer. 9.3% is the percentage increase in financial year 23. Correct, Manish. Now this from when will the final norms for outsourcing of IT related services by financial sector entities released by RBI come into effect? Easy question again. One marker. Correct, Sumit. Correct, PJ. Right. Correct, Nikhil. Correct, Nivedita. It's the October 1st. Okay. Now last. What is the revised global growth for 2022? 2023 as per World Bank? Piggybacking. Because Chinese growth will be 5.1%, up from earlier estimated 4.3%. Correct. Nivedita right. Babrata right. Sumit, PJ, Nivedita. Yes, everyone is right. Manish, no. Okay, so it's D. Correct, Nikhil. It's D, 2%. ठीक है, रिवाइज्ड ग्लोबल ग्रोथ इज 2%. 3 महीने बाद फिर रिवाइज कर देंगे, तो उससे पहले एग्जाम हो जाए तो अच्छा है. 3% बाई वर्ल्ड बैंक, बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी विल ग्रो at 0.8% higher than earlier estimated. Okay, correct, Nikhil. Okay, so that's it for today. Easy class. Thank you for joining, everyone. I hope you like the lecture. अगर आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड हुआ तो डू लाइक एंड शेयर. मिलते हैं in the next class tomorrow, obviously. And if you have any queries, you can reach out to me on Telegram. Thank you. Bye bye.